Good evening, all of you. Today I am going to start the chapter Nationalism in India. आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? नेशनलिज्म इन इंडिया। इट्स हिंदी मीनिंग इज भारत में राष्ट्रवाद। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। स्टूडेंट्स, आई विल डिस्कस each and every topic as well as I will ask the questions and I will explain these answers also. Okay, thank you very much. Nationalism in India. So just you know what is nationalism. Nationalism means love and pride for our nation. In previous chapter you have also been studied about the meaning of nationalism. Indians, now we are going to study about nationalism in India. First of all, we have already been discussed in earlier classes how our country became slave. हमारा देश कैसे गुलाम हुआ. We all know that British came to India as traders, but Indians were disunited, and one by one British conquered each and every region of India. There were kings, there were nawabs, and they were fighting among each other, and British took its advantage, and they controlled at first Bengal after the Battle of Plassey. Just you know that. Battle of Plassey was won by British because of the help of Commander-in-Chief of Bengal Army, Mir Jafar. You already been studied. After that, Indian people started to came free from British. They struggled hard, and it was visible in 1857, where Hindus and Muslims both unitedly fought against British rule. All you know about this. अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 1857 के बाद के circumstances पर. British also understood that Indian people could not be controlled with the use of force or without the support of Nawabs and kings. And Indian leaders also understood that it is difficult to just went away British with the use of force. And after that, in 20th century, there were some factors. So just we have to discuss first what were the factors for the growth of nationalism in India. भारत में जो नेशनलिज्म का ग्रोथ था उसका फैक्टर्स क्या था, इसमें हम एक एक करके डिस्कस करें. Now, political and administrative unification of India. You can see that under the British rule, India was politically united from Kashmir to Kanyakumari, from Assam to Assam, West Bengal, and even Northeast Gujarat. These were all under the control of British rule. तो इंडिया भारत को पूरी तरीके से ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में किया. Yes, obviously true, one by one. There was uniform law and administrative system. Uniform law. British started the law in India. They started Supreme Court in India. They started police administration in India. So these were almost the same everywhere. People were mostly dissatisfied against the British rule, united against common enemy. What happened? Sister, what political and administrative unification of India helped the growth of nationalism. कैसे मदद किया? क्योंकि पूरे देश में एकमात्र ब्रिटिश रूल, only one the British rule. Earlier what happened? पहले क्या था? बंगाल के नवाब अलग, मैसूर के नवाब अलग, या पंजाब के राजा अलग, अलग अलग रूल थे मराठा एम्पायर. तो इट मीन्स दैट हाउ कुड पीपल यूनाइट? अगर लोगों में डिससेटिस्फैक्शन था तो किसके अगेंस्ट था? मराठा रूलर के अगेंस्ट, मैसूर के रूलर के अगेंस्ट, बंगाल के नवाब के अगेंस्ट. वो लोग डिससेटिस्फाइड थे तो लोग अपनी अपनी जगहों पर अपने अपने राजा के अगेंस्ट, अपने अपने नवाब के अगेंस्ट स्ट्रगल करते. राइट? बट व्हाट हैपेंड आफ्टर the unification? Administrative system, India was united. उस unification के बाद क्या हुआ? Just you understood that there was single enemy of every Indian. If there were anywhere dissatisfaction, there was
British government was responsible. So people got invited. Next is modern education. Now I will tell you how modern education played an important role in the growth of nationalism. British introduced English education in India. You all know that ब्रिटिश ने इंडियन जो कल्चर थे, इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम था, ब्रिटिशों से क्या कहा? ब्रिटिश ने कहा दीज आर प्रीमिटिव्स, ये प्रीमिटिव है, ये पुराने जमाने के, दिस कांट बी सस्टेन्ड विथ मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के साथ इसे सस्टेन नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने कहा हम क्या करेंगे, इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा देंगे। दे प्रमोटेड व्हाट? दे प्रमोटेड इंग्लिश एजुकेशन। तो ब्रिटिश ने किसे प्रमोट किया? इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया। बट इंग्लिश एजुकेशन टॉट इंडियन पीपल अबाउट द यूरोपियन आइडिया ऑफ इक्वालिटी। अब ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद इंग्लैंड में भी लोगों को बहुत सारे राइट्स मिले थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पूरे यूरोप में इक्वालिटी लोगों को मिली, लिबर्टी, फ्रीडम बहुत सारे मिले, फ्रेटर्निटी। अब ये सब इंडियन लोगों को भी टॉट किया गया, इंडियन पीपल वर टॉट आल्सो, ये सब इंडियन लोगों को भी पढ़ाया। अब जो इंडिया में एजुकेटेड पीपल थे, दोज पीपल हु गॉट द इंग्लिश एजुकेशन, यस देयर नंबर्स वर वेरी फ्यू, हालांकि वो काफी कम लोग थे, लेकिन उन्होंने जो शुरुआत में इंग्लिश स्टडी करी, इंग्लिश एजुकेशन लिया, उन राइट्स के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने क्या कहा, द सेम राइट्स वी वांट व्हाटएवर द पीपल आर एंजॉयिंग इन यूरोप। जो यूरोप में लोगों को राइट्स मिल रहे हैं, वही राइट्स हमें भी चाहिए। ये किसने कहा? इंडियन एजुकेटेड पीपल। तो ये डिमांड बढ़ी, और जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ा, वैसे ही हमारे देश में जो डिमांड्स थी इक्वलिटी की, लिबर्टी की, फ्रेटर्निटी की, वो उन्होंने डिमांड करी सरकार से, गवर्नमेंट से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और ये सारे आइडियाज लोगों के पास कहाँ से आए थे? ये सब इंग्लिश एजुकेशन के द्वारा आए थे। ये ब्रिटिश के और यूरोपियन आइडियाज थी, जो इंडियन लोगों ने कहा कि when these rights are enjoyed by the people of Europe, why not? We should have. Okay, next thing is that formation of Indian National Congress. Indian National Congress led the nationalists. As you know that Indian National Congress was founded in 1885, and ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? इनिशियल गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज टू प्रोवाइड हेल्प टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक्चुअली इसका एक मकसद ये था कि ब्रिटिश के अगेंस्ट जो डिससेटिस्फैक्शन है उसको कम। हाउ? एओ ह्यूम, रिटायर्ड ऑफिशियल, ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिशियल, फाउंडेड इट। और उन्होंने कहा था, उनकी सोच थी, इंडियन पीपल डोंट अंडरस्टैंड द प्रोग्राम्स ऑफ ब्रिटिश। जो भारतीय गरीब लोग हैं, वो ब्रिटिश के जो डेवलपमेंट प्लान है उसे समझते नहीं है। एंड ब्रिटिश, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रियलाइज फॉर द ब्रिटिश ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियंस। और ब्रिटिश के लिए भी इंडियन के प्रॉब्लम को रियलाइज करना क्या होगा? मुश्किल है, क्योंकि वो उनकी भाषा से अनजान है, इंडियन इनके कल्चर से अनजान है। तो इसलिए कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या होगा? इट वुड बी अ लिंक, ये लिंक होगा बिटवीन द कॉमन पीपल एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और कॉमन पीपल के बीच में एक लिंक होगा, जो शायद रिवोल्ट्स को कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। तो स्टार्टिंग, actually the goal, aim of that there will be peace in country, there will be reduction of the revolts against the British rule. But what happened? Its leaders initially supported the government, but later, particularly since 1905, INC started mass movement. Their leaders, Lal Bal Pal, Lal Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal, Aurobindo Ghosh, such type of leaders were considered as extremists. These extremist leaders started mass movement against the British rule, and later Indian National Congress became an important tool, important part of the freedom struggle. Next is
Emergence of national leaders. Just we have discussed Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal, etc. were popular leaders of IS. People inspired under their charismatic leadership. These were very good leaders. Bipin Chandra Pal was in Bengal. Bal Gangadhar Tilak was in Maharashtra. Lala Lajpat Rai was popular in Bengal. But India required a national leader. भारत को एक नेशनल लीडर की जरूरत थी जो पूरे देश में स्ट्रगल कर सके. एंड गांधी जी became very important leader after 1950. After 1915, the freedom struggle came under the leadership of Gandhiji, and Gandhiji played a very important role. So leaders, and we in this chapter we have to discuss about the Gandhiji leadership of the Congress, and whatever the movements were started by Gandhiji, we all discuss in this chapter. Okay. Next is literature, art, and national flag. So just like their literature was also developed, writer like Bankim Chandra Chatterjee, he wrote Anandamad. Just popular song Bande Mataram. Yes, our national song. It is taken from the book Anandamad. And Bande Mataram was a song as well as it became one of the best slogan used as a tool against the British government during the freedom struggle. और ये टूल्स के रूप में यूज किया गया बंदे मातरम जो लिटरेचर का पार्ट था और कह सकते हैं मॉडर्न प्रेस की वजह से बिकॉज ऑफ द प्रेस there many people started writing, editing their newspapers, journals, and it proved a very good thing against the British government. For example, Bal Gangadhar Tilak published 2 newspapers or journals, Maratha and Kesari, and he wrote, Swaraj is our birthright and I will have it. So praise their educated members started their praise, and it inspired large number of other educated people. Just like art, we discussed, Abhinavanath Tagore painted the picture of Bharat Mata, which became a sacred figure. It attracted people, it inspired people to help their mother to get liberated. So that भारत माता की तस्वीर ने लोगों को इंस्पायर किया. जंजीरों में जकड़े हुए माता को देखकर लोगों को लगा कि नहीं, हमें इन जंजीरों से क्या करना है, आजाद कराना है. So just like Abhinavanath Tagore played a very important role. Its speaker played very important role. Flag, yes, flag was for nation, and first flag was hoisted during the movement after Bengal partition. It was tricolor, red, green and yellow. अगर आप देखोगे उस टाइम के फ्लैग को तो 3 कलर थे, रेड, ग्रीन और येलो. मिडिल इट वाज 8 लोटस. लोटस इज प्रिंटेड, और लोटस का मतलब क्या था, डिनोट करते थे 8 स्टेट्स. At time there was 8 regions, 8 states, provinces in India. Crescent moon was there that denoted Hindu-Muslim unity. So just that Bengal partition के दौरान हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर के बंगाल पार्टीशन का विरोध किया. उनको ये पता चल चुका था कि बंगाल पार्टीशन के पीछे ब्रिटिश का मकसद क्या है. उनका मकसद था हिंदू और मुस्लिम को अलग करना. ईस्ट बंगाल was of Muslim majority and West Bengal was of Hindu majority. और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने दोनों को अलग कर दिया, ईस्ट और वेस्ट बंगाल को. Communal card they played but well understood by Indian leaders, and Indian leaders just went against this. They started movement and they started the use of Swadeshi and boycott. First time स्वदेशी और boycott, अपने देश में बनी चीजों का इस्तेमाल करना, स्वदेशी, और boycott, not using the British products, goods. These were boycotts.